आ जाओ दोस्तों। वक्त से पहले इससे पहले कि मैं प्रेडिक्शंस की बात करना शुरू कर दूं, क्योंकि आपको पता है कि भाई लास्ट टाइम चैंपियंस लीग प्रेडिक्शंस कुछ ज्यादा से भी ज्यादा तकड़ी दे दी थी। ओनली गाय हु प्रेडिक्टेड दैट बार्सिलोना विल एंड अप इन द यूरोपा लीग एंड दे डिड इवेंचुअली। लोग मेरे को काफी कुछ कह रहे थे, बट आई वाज लाइक कि ब्रो आई एम डिटरमाइंड ऐसा होगा। तो आज थोड़ी सी जो प्रेडिक्शन है उसे एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे। यूसीएल प्रेडिक्टर प्रेडिक्ट करेंगे भाई, साथ में साथ कुछ मुनाफा तो हो भाई, कुछ मुनाफा, कुछ बढ़िया तो हो, कुछ प्यारा तो हो। जल्दी से आ जाओ सारे के सारे जितने भी हैगे, क्योंकि भाई चैंपियंस लीग शुरू हो रहा है। तो छोटे मोटी बातचीत नहीं भाई, चैंपियंस लीग। एक सेकंड भाई, नोटिफिकेशन तो आ रही है। नहीं, अभी तक नहीं आया नोटिफिकेशन भाई। दैट इज सैड टू बी वेरी ऑनेस्ट। दोस्तों क्या हाल चाल। दोस्तों अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आया तो नोटिफिकेशन ऑन कर लो भाई, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो नोटिफिकेशन वापस से ऑन करो। मैड्रिड चैंपियंस लीग स्टार्ट्स टुमारो। ट्रेसी व्हाट्सअप। नॉट हमारा मैच तो वेडनेसडे रात को है। हमारा मैच तो वेडनेसडे रात को है। जितने भी लोग आ गए भाई, लाइक करो, कमेंट करो, और मैंने एक पोल डाल रखी है, उसमें भी पार्टिसिपेट करो। एक सेकंड बस, हम शुरू करेंगे भाई। पहले बातचीत कर लेते हैं भाई, क्या सीन है, कौन कौन सी टीमें आ रही है बड़े दिनों के बाद। यू कैन सी आर्सेनल कमिंग बैक टू द चैंपियंस लीग। लास्ट टाइम अराउंड आपको याद ही होगा, 5-1 वाली वाइब चल रही थी भाई। 3-1 बायर्न विन सीधे भाई। मैड्रिड का मैच वेडनेसडे को, यस भाई। यूनियन बर्लिन नहीं भाई, ऐसा नहीं होने वाला। लेट मी टेल यू दैट दोस्तों। तो मैं पहले बता दूं हम लोग क्या करने वाले हैं स्ट्रीम में अलग, जो आप बाकियों में नहीं करके आए हो और अब बोलोगे भाई सो गए थे तो सब यही कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई हम करेंगे प्रोडिक्शंस भाई, देखते हैं किसके कितने प्रोडिक्शंस राइट होते हैं, हम सबके मिलके कितने प्रोडिक्शंस हम राइट कर पाते हैं इसमें। तो बेसिकली ये आप चैंपियंस लीग की साइट पे जाके काफी सारे गेम्स खेल सकते हो, जैसे कि एक तो वही है फैंटेसी 11 बनाओ। ठीक है, फैंटेसी फुटबॉल बनाओ। एक प्रेडिक्टर है जो मैंने स्टार्ट प्रेडिक्टिंग वाला दबाया है। एक गोल स्कोरिंग वाला भी है। तो काफी कुछ है। हम तो ये प्रेडिक्टर खेलेंगे, हम तो प्रेडिक्टर खेलेंगे सबसे ताबड़तोड़। पहले कुछ चीजें बता, पहले थोड़ी सी लेट्स हैव अ लुक एट ऑल द टेबल्स एंड ऑल द टीम्स दैट वी हैव। पहले तो बता दो भाई, तुम्हें क्या लगता है कौन है फेवरेट्स और इस चैंपियंस लीग के, हु आर द टॉप 3 टीम्स। देखो टॉप 2 तो सब प्रेडिक्ट कर रहे हैं। टॉप 2 एक मैन सिटी, एक बायर्न, बट टॉप 3 की जो बात आ रही है, व्हिच इज द थर्ड टीम आउट ऑफ यंग बॉयज, लाइप्जिग, मिलान, न्यूकासल, शख्तार, पोर्टो। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली मैन सिटी। तो हमारी बात लगी, पीएसजी आर दे द फेवरेट्स। व्हाट्सअप क्या हाल चाल भाई, क्या हाल चाल। लाजियो, एटलेटिको मैड्रिड, फेनरबोर्ड, सेल्टिक, रियल मैड्रिड, यूनियन बर्लिन, नापोली, बेंफिका, रियल सोसिएडाड, भाई कम ऑन, इंटर मिलान, आर्सेनल, सिविया, लेंस यूनाइटेड। क्या लगता है हु इज द थर्ड टीम दैट इज गोइंग टू बी द फेवरेट फॉर मैड्रिड के अपकमिंग मैच आर हॉट टिल अक्टूबर। हाँ भाई, ये जो 16 मैच में रियल मैड्रिड 6 बार खेल रही है, ऑल ऑल ऑफ देम आर प्रीटी हॉट भाई। तू बता, बायस हटा के भाई, मेरी बायस हटा के अगर मैं बताऊं, ये तो तुमने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया वैसे। बट जितनी क्लियर वो दोनों टीम है ना, वैसी कोई क्लियर टीम है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर तो मैं बायस हटा भी दूं, ठीक है, मतलब फिर जितनी जितनी क्वालिटी और डेप्थ पीएसजी के पास है, तो पीएसजी होनी चाहिए। बट नहीं, मतलब इंटर मिलान आई कैन से भाई, इंटर मिलान, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, इन तीनों में से कोई होगा, क्योंकि इंटर मिलान आर स्कोरिंग गोल्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर। नापोली कहता मैं, नापोली, बट द वे दे हैव स्टार्टेड द लीग, बहुत ही पुअर लीग स्टार्ट करी है। एक हारे एक ड्रॉ हुआ है अभी पिछले कुछ में। पिछला ड्रॉ हुआ, उससे पहले लाजियो से हारे थे 2-1। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फिक्चर्स है दोस्तों, अगर तुम देखोगे ध्यान से तो काफी इंटरेस्टिंग फिक्चर्स है। ऐसा नहीं कि भाई सिंपल एंड लिखे हुए, मम्मी, सिंपल और लिखे हुए नहीं है कि भाई तुम बोल सकते हैं हाँ भाई ये जीतेगी ये हारेगी, ये जीतेगी हारेगी, वो वाली बातचीत नहीं है। लेट्स प्रिडिक्ट भाई, यंग बॉयज वर्सेस लाइप्जिग भाई। जल्दी से स्कोर्स बता दो अपने अपने भाई। मैं मुझे जिता दो प्लीज, प्लीज मुझे जिता दो। पहले तो एक बार टेबल की तरफ हम चले जाते हैं, एक बार टीम देख लेते हैं हम, कौन कौन सी टीम है इस बार ग्रुप स्टेज में। यही है सारी की सारी भाई, आर्सेनल, एथलेटिको। वैसे दोस्तों आई नो कि कोई आर्सेनल फैन होगा नहीं अभी इस टाइम पे। हेलो ब्रदर, व्हाट्सअप व्हाट्सअप व्हाट्सअप। क्या लगता है दोस्तों, जयंत भाई आज की वीडियो क्लिप्स देखा क्या? ईरान के फैंस रोनाल्डो को देखने के लिए पागल हो गए थे। यस भाई, मतलब ऑब्वियसली भाई, अगर इंडिया भी आए तो हम पागल ही हो जाएंगे। दोस्तों स्ट्रीम को लाइक कर दो यार, जितने भी लोग आ रहे हैं। आई नो आई हैव स्टार्टेड दिस प्रीटी प्रीटी लेट,
बट जितने भी आ रहे हैं उनको बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत थैंक यू और आते ही स्ट्रीम को लाइक कर दो। दोस्तों तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग ग्रुप कौन-सा लगा है इस बार चैंपियंस लीग में? बिकॉज़ इस टाइम चैंपियंस लीग में मेरे ख्याल से तो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ डेथ नहीं है, 2 ग्रुप ऑफ डेथ हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिर्फ एक मतलब एक अंडरडॉग्स का भाई व्हाट्स योर लीग आईडी इन यूजुअल फैंटेसी? भाई अभी तो मैंने बनाई नहीं है। तेरे को बता रहा हूँ मैं बना दूँगा तो बता दूँगा, अगर नहीं बनाया तो फिर अगले में बता दूँगा ब्रो। अ एक बार मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्या कहते हैं ग्रुप्स कौन-कौन से सबसे इंटरेस्टिंग ग्रुप कौन-सा है। देखो बायर्न यूनाइटेड, कोपेनहेगन, गालातासरे इसमें जिस तरह की यूनाइटेड की फॉर्म है ना, वो चीज़ थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग बनाती है ग्रुप को ऐसे ऐसा भाई अगर ऐसा हो गया तो फिर तो टेन हैग की जॉब सच में प्रॉब्लम में आ जाएगी टू बी वेरी ऑनेस्ट इफ इफ मैनचेस्टर यूनाइटेड मतलब डोंट मेक इट टू द नेक्स्ट वन भाई। ज़ैबियन अगेंस्ट बेलिंघम चैंपियंस आई एम स्केयर्ड ओके। ज़ेबी बैन अगेंस्ट ओके, ओके भाई। लाइक कर दो दोस्तों स्ट्रीम को अगर तुमने लाइक नहीं किया, वक़्त से पहले लाइक कर दें प्लीज़। होज़ेलू आई टोल्ड यू मैन भाई। नितिन भाई इफ यू आर फ्री यू आर मतलब फील फ्री टू जॉइन यार। नितिन भाई इफ यू आर फ्री यू कैन कम एंड जॉइन द स्ट्रीम भाई। Uh, but I'm talking about the Group A, मैनचेस्टर यूनाइटेड, कोपेनहेगन, गैलातासराय। गैलातासराय के पास काफ़ी फायर पावर है, ज़ाहा है उनके पास इकार्डी है, तो काफ़ी प्लेयर्स वहाँ पर आए हैं। यूनाइटेड का आज मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग भाई, मैं बियर ब्रीचेस रिपोर्ट पे देख रहा था और अगर उनका इंस्टाग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, 1 मिनट में उनका दिखाता हूँ, तुम पागल हो जाओगे जो उन्होंने पोस्ट डाला है भाई। एक तो बड़े तगड़े लोग हैं, ऐसे-ऐसे पोस्ट लेके आ जाते हैं मार्केट में। तुम उनका पोस्ट देखोगे तुम बोलोगे भाई जैन भाई ये थैंक्स करने के लिए मतलब लेजिट और आपको सिम्पैथी आएगी खुद। तुम्हें सिम्पैथी आएगी बहुत ज़्यादा फॉर क्या कहते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड देयर फैन्स भाई। दे आर नॉट क्राइंग ऐसे ही भाई। वाना जैन भाई व्हाट्स अप ब्रदर व्हाट्स अप? किस पे दिखा रहे हो? 1 मिनट रुको। 1 मिनट मैं नेथन भाई को बुला लेता हूँ। नेथन तो मतलब वो पोस्ट अभी मेरे को मिल नहीं रहा बट द पोस्ट इज ऑल अबाउट दोस्तों कि किस तरह से मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव ऑल टुगेदर गुड इवनिंग ब्रदर गुड इवनिंग व्हाट्सअप ब्रदर व्हाट्सअप दोस्तों स्ट्रीम को कर दो लाइक वक्त से पहले। तो द पोस्ट वाज ऑल अबाउट क्या कहते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की इंजरी की जो है 11 कैसे बन सकती है। वेराने इज इंजर्ड, लूक शॉ इज इंजर्ड, मलासिया इज इंजर्ड, वेन बिजाका इज इंजर्ड 4, माउंट इज इंजर्ड, देन हु इज आल्सो इंजर्ड, होजूलैंड भी शायद इंजर्ड ही है ना, होजूलैंड भी इंजर्ड है, मार्शल भी शायद इंजर्ड है। तो मतलब ऐसे करके अगर तुम देखो तो पूरी की पूरी अमराबाद इज आल्सो इंजर्ड। तो पूरी की पूरी जो उनकी क्या कहते हैं टीम है वो इंजर्ड है बिल्कुल मतलब डाउन डाउन भाई इंजर्ड। और इस टाइम पे जिसमें you say without Vinny, how do you see? It's not about Vinny. Vinny is not out for the season, by. He is only, I guess, out for the first game against Union Berlin. He will make it for the Napoli one for sure. मेरे को ऐसा लगता है. I hope that happens, भाई. I hope that happens. He comes back because he is needed. Rodrigo कुछ ज़्यादा ही try कर रहा है. Let's talk about the second group, भाई. Second group, Sevilla, Arsenal, PSG, Lens. This is now a very interesting group. अगर तुम देखो सिविया का फॉर्म बहुत खराब है एंड उनका तो पूरा पर्पस ये होता है कि थर्ड फिनिश कर जाए हम किसी तरह से चैंपियंस लीग में ताकि हम यूरोपा लीग में मिलाएं। दे रजिस्टर देयर फर्स्ट विन आफ्टर चैंपियंस आफ्टर क्या कहते हैं एल कैपिटानो। रैमोस ने डेब्यू करा तब उन्होंने पहला मैच जीता है वरना वो रेलिगेशन जोन पे नहीं लास्ट थे ऑन द टेबल। यूनाइटेड हाँ उस टाइम यूनाइटेड का प्लेन क्रैश होता वैसा फील एंड वाइब आ रहा है यूनाइटेड टीम उस नहीं भाई मतलब अभी तो मतलब पता नहीं है काफी यूनाइट करने की कोशिश थी टेनेक द्वारा बट काफी ज्यादा डिवाइड हो रखी है इस टाइम पे। मैं फिर से कहूंगा बेलिंगम का क्या हर चीज में बेलिंगम मैंने बेलिंगम का नाम लिया अभी पता नहीं भाई पता नहीं बेलिंगम अच्छा जैव बेल्जियम को मैंने बेलिंगम पढ़ा होगा माइट माइट बी द केस भाई माइट बी द केस। पीएसवी की अगर हम स्टैट्स देखें इस सीजन की तो ऑन द टेबल दे आर दे आर टॉप ऑफ द टेबल ठीक है। दे हैव क्या कहते हैं रजिस्टर 4 आउट ऑफ 4 विंस। हेलो भाई व्हाट्सअप लॉन्ग टाइम क्या हाल है बॉर्न फ्रॉम फ्लेम्स क्या हाल चाल है।
लॉन्ग टाइम के बाद। और अगर तुम देखो पीएसवी भाई अच्छे, नोआ लैंग काफी एक तगड़ा है, लूक डियोंग, लूक डी गोट इज देयर, हार्विंग लोजानो फ्रॉम नापोली से इस सीजन गया हुआ है, सर्जिनो डेस्ट फ्रॉम बार्सिलोना। तो काफी आपको प्लेयर दिख जाएंगे यहाँ पर, पैट्रिक वेन एनहॉल्ट, अनदर अनदर क्या कहते हैं डच इंटरनेशनल, जो कि अच्छा प्लेयर है। और कौन कौन है इसमें, किसी को मैं जानता हूँ, किसी को मैं जानता हूँ, और देखना पड़ेगा फुटबॉल, नहीं जितना जानता था दोस्तों मैंने बता दिया उसको। तो पीएसवी आर ऑन अ हॉट रनर फॉर्म, दे हैव स्कोर्ड 13 गोल्स एंड जस्ट हैव कंसीडर्ड वन। तो ये एक जो मैच होने वाला है वो अच्छा होने वाला है। पीएसवी इज स्कैरी इंडीड भाई, पीएसवी, सर्जिनो डेस्ट, हाँ सर्जिनो डेस्ट, सर्जिनो डेस्ट तो मैंने बोल दिया। व्हाट्सअप यार दीपांकर भाई, व्हाट्सअप दीपांकर भाई। हाँ मतलब वी विल टॉक अबाउट यूरोपा लीग एज वेल, जस्ट फॉर यू, बिकॉज यू आर वन ऑफ द मॉड्स। तो मॉड्स क्या भाई, आप तो वो भी हो, हमारे मेंबर भी हो, तो आपके लिए हम बात करेंगे उसके बारे में भी, बट थोड़ी देर बाद। अभी पहले इसके लिए इसके बात कर लेते हैं। तो पीएसवी होगी हमारी बातचीत, एंड देन देर इज लेंस। लेंस की बात करते हैं, लेंस इज ऑल्सो अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल टीम व्हेन इट कम्स टू लीग। लेंस एफसी sitting 18th on the table, lost to Monaco, lost to PSG, बट उनके मैचेस भी देखो किसके साथ हुआ स्टार्टिंग में, आपको देखना पड़ेगा। रेनेस के साथ 1-1 ड्रॉ, ब्रेस्ट से भी हार गए, तो दे हैव बीन अटरली पुअर। तो अगर उसके हिसाब से मैं प्रेडिक्ट करने चाहूँ, तो फिर उसके हिसाब से मैं कहूँगा फर्स्ट सिविया, फर्स्ट आर्सेनल, सेकंड पीएसवी, थर्ड सिविया एंड फोर्थ आर्सेनल आउट ऑफ द वो। ग्रुप सी आ जाती अपनी फेवरेट बातचीत वाली ग्रुप। 1 मिनट का स्लो मोड। हाला मद्रिद ब्रो, जयंत भाई क्या हाल है माइकल यार, व्हाट्सअप व्हाट्सअप, कैसे लाइक कर दो यार स्ट्रीम को। हेलो जयंत ब्रिंग सूरज भाई, सूरज भाई कल आ जाएंगे यार आपके समक्ष, ही इज कमिंग बैक इन द मॉर्निंग। आई थिंक आर्सेनल पीएसवी। दोस्तों तुम्हें क्या लगता है, सब बताओ यार, जितने बंदे भी देख रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस ग्रुप भाई, हु इज गोइंग आउट एंड हु इज गोइंग इन पीएसवी? I think Arsenal PSV will go through. Sevilla and Lens are not convincing. Yes, the form of Sevilla is very very poor, and I hope जैसा ला लीगा की टीम्स के साथ होता आ रहा है वैसा ना हो। मतलब ला लीगा की टीम से काफी डिसअपॉइंट कर दिया है। हम क्या कहते हैं, यूसीएल जो रैंकिंग देती है यूरोपियन रैंकिंग के हिसाब से, वी आर द फोर्थ बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, ऐसा ही कुछ चल रहा है भाई। जोई वीरमान मस्त है, ओके ओके ओके। लेट्स टॉक अबाउट द ग्रुप दैट वी ऑल वांट टू टॉक अबाउट। नापोली, रियल मैड्रिड, यूनियन बर्लिन। भाई यूनियन बर्लिन का बहुत ज्यादा शाउट है कि भाई दे कैन डू दिस, दे कैन डू दैट, वो वाली चीज है। एंड मतलब यूनियन बर्लिन का एक बार लोगों ने पढ़ लिया पिछले साल की भाई मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, बहुत तगड़ा होने वाला है यूनियन बर्लिन। बट टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू भाई, दिस सीजन दे हैव नॉट बीन दैट कन्विंसिंग भाई, तुम देख ही सकते हो। मैंने अभी यूनियन बर्लिन खोला है, मैंने अभी यूनियन बर्लिन खोला है, एंड क्या कहते हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है ना, हाँ मेंस को उन्होंने 4-1 हराया, यूनियन बर्लिन को ने फिर ड्रैम्स्टाड को 4-1 हराया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ड्रैम्स्टाड एक ऐसी टीम है जो कि रेलीगेशन मतलब प्रमोट होके आई है। देन दे लॉस्ट टू आरबी लिप्जिग, देन दे लॉस्ट टू वुल्सबर्ग अगेन, लास्ट टाइम अराउंड दे हैव लॉस्ट 8th ऑन द टेबल, won 2, lost 2, scored 9 but conceded 7। यूसीएल फैंटेसी बनाओ बना देता हूँ भाई, देख भाई उस फैंटेसी रेडी है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ दोस्तों। कहीं जाना मत, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि देखो एक तो नेथन भाई हमारे साथ है। Hold on, give me a second. ओके, दूसरी चीज ये है कि भाई हम गेम भी खेलने वाले हैं, वी आर गोइंग टू प्ले दिस प्रेडिक्टर काइंड ऑफ अ थिंग, जिसमें वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट द स्कोर लाइन, और देखते हैं जितने क्लोज हम आएंगे उतने हमें अच्छे पॉइंट्स बनेंगे। कुछ नहीं कर पाएगी यूनियन बर्लिन, आई थिंक सो भाई, वी नीड टू विन अगेंस्ट यूनियन बर्लिन, वी हैव टू भाई। एंड आई होप फ्रान गार्सिया डज हिज जॉब, नॉट लाइक in the first half. Well, how he played in the first half was piss poor. Second half, what a player भाई, magical. Second half बंदे ने गेम चेंज कर दिया भाई। तो मेरे को इसमें यही लगता है भाई, आई थिंक इट्स यूनियन वर known for their good defense, now they're conceding goals, Real Madrid and Napoli should go through, yes भाई, even I think so भाई, even I think Siddhant भाई that Real Madrid will go to the next round as stable toppers। भाई क्या लगता है, नापोली या फिर रियल मैड्रिड, हु इज टॉपिंग द ग्रुप? दोस्तों स्ट्रीम को लाइक कर दो, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें वक्त से पहले दोस्तों। क्या लगता है, नापोली
मैं एक बारी वो भी डाल देता हूँ, पोल भी डाल देता हूँ, देखते हैं क्या लगता है आप सबको। पिछला वाला पोल एंड किया। हु विल टॉप द ग्रुप? नापोली, रियल मैड्रिड। दोस्तों पोल इज आउट, न्यू पोल इज आउट भाई। नापोली तो इंडिविजुअल बिटवीन से क्वालिफाई कर जाएगी, टीम उतना कुछ खास नहीं लग रही। दे हैव दे आर नॉट एज गुड एज डिफेंसिव यूनिट दे वर लास्ट टाइम भाई। एक तो उनका मैनेजर भी चल गया, उसके बाद भाई चलो कल जैसा हायर लोअर, नहीं नहीं अभी हायर लोअर की बारी नहीं है भाई, अभी हम खेलेंगे कुछ और। ठीक है, बायर्न यूनाइटेड को 8 पे लेंगे, उसके बारे में बात करेंगे भाई। एक्सेंटर भाई, हैव यू टॉक्ड अबाउट बार्सास ग्रुप ऑलरेडी? सॉरी, जस्ट जॉइन द स्ट्रीम एंड वांट टू नो योर थॉट्स। नहीं भाई प्रथम भाई, वी आर ऑन ग्रुप, अभी वी आर ऑन ग्रुप सी है अभी। अभी हम DEFGH के बारे में बात करेंगे, बट you also know there is hi Jeet bhai, what's up. There's not a lot to talk about Barcelona's group. It's a very straight up group, to be very honest भाई, तेरे को भी पता है। मतलब no Barca fan will be panicking this time around, क्योंकि it's a easy group। मेरे को नहीं लगता कि भाई कोई ये बोलेगा कि नहीं भाई बहुत ही डिफिकल्ट ग्रुप दे दिया भाई, इससे कैसे जीतेंगे, ऐसा कोई बातचीत नहीं है। बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रुप है। बोरिंग ग्रुप भी तुम कह सकते हो, क्योंकि उसमें पता है बार्सिलोना जितने स्टैट पैड कर सकती है उतने कर सकती है। लेवेंडोस्की कैन स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स भाई। लेट्स बी रियल, लेट्स बी रियल। बार्सा ग्रुप इज ए। हाँ भाई, हाँ भावेश भाई, क्या हाल है भाई? लाइक कर दो स्ट्रीम को यार, लाइक कर दो। यूनियन बर्लिन भाई, इफ विनी एंड आर्दा अराइव्स विल डॉन कॉल स्विच टू 4-3। नहीं भाई, 4-4-2 सेट हो गया माइकल भाई। आई एम पैनिकिंग, वी आर फेसिंग बेल्जियम चैंपियंस भाई। घंटा कुछ नहीं है, शुड नॉट पैनिक भाई, शुड नॉट पैनिक। वैसे ये क्या है, मुझे मुझे लेजेंड याद नहीं आ रहा है, पता नहीं है यार। मयंक भाई एक बार बताते, व्हाट वुड बी योर मिडफील्ड अगेंस्ट बर्लिन भाई? मतलब आई विल तो ब्रिंग इन कामाविंगा इन दैट भाई, प्रेस देम एंड गैस ऑफ कर दो उनकी फर्स्ट हाफ में पूरी की पूरी। सेकंड हाफ ब्रिंग इन क्रूज मॉड्रिच, खत्म भाई। ओके ब्रो, डोंट गेट ग्रुप दिस टाइम। Anything less than top place is a failure in my view, but I trust our manager to get the job. ना भाई, very entertaining group for me as a Barca fan. अक्सर ऐसे बोरिंग ग्रुप रियाल को मिलते हैं। चलो कोई बात नहीं, मजे कर ली। भाई भाई भाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट रोड्रिगो भाई? इज ट्राइंग टू हार्ड भाई। ही इज, आई डोंट नो व्हाई, बट ही इज ट्राइंग टू हार्ड। मतलब ऐसा है उसको कि भाई मेरे को गोल मारना ही मारना है, गोल मारना है। मतलब इट्स लाइक कि अगर तुम ब्राहिम डियाज कल सेकंड हाफ में आया एंड ब्राहिम डियाज ने जितना खेला है ना इसमें यू विल बी शॉक्ड। उसका क्या कहते हैं, चांस क्रिएशन इज मच हायर, बिग चांसेस क्रिएटेड जो उसका है वो बहुत ज्यादा है रोड्रिगो से। अगर मैं तुम्हें ये वाली बात बताऊं, एंड सिर्फ 24 या 25 मिनट खेला है हार्डली ब्राहिम डियाज, कंपेयर टू 4-5 फुल गेम रोड्रिगो। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई ही इज ट्राइंग टू हार्ड टू स्कोर। इफ ही कैन सिंपली पास द बॉल एंड try to make a combination with Joselu. So it will be. By the way, congratulations on the win, top of the table. Keep it warm for us, Pratham bhai. Always, Pratham. Don't you worry, bhai. Like the stream, everybody. Nathan Parwal just joined in. Mashallah, what's up, Nathan bhai? After Brighton, it's Bayern. मैं शायद उसी ग्रुप पे आ गया हूँ अब शायद। नहीं, इट्स ग्रुप डी। अभी शेयर करता था एक बार, ये थोड़ी देर में खेलते हैं हम। Or you want to talk about Bayern versus Real Manchester United? Anything's fine, no problem. चलो थोड़ा सा मतलब एक ही ग्रुप रह गया, तो उसके बाद तो आ ही जाएगा। इट्स ग्रुप डी, बेनिफिका, इंटर, साल्जबर्ग एंड रियल सोसिएडाड। इन माय ओपिनियन अ वेरी गुड एंड अ टफ ग्रुप। सेकंड प्लेस अगर तुम बात करो तो, क्योंकि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट प्लेस, इट्स ऑलरेडी बुक्ड बाय द HM. I think Inter Milan are on the hottest run, and the team looks extremely well balanced. They are in a red hot form. Defeated 5-1 AC Milan AC Milan. in the Milan derby. Why that was crazy, man. Yeah, I mean, yeah, they're definitely the favorites. But honestly, Europe is one of those things, man. Europe is one of those things where shock results happen all the time. I mean, let's be honest. You guys lost to Sheriff. Barcelona got knocked out of the group. Anything can happen. I think there are good teams. Benfica obviously played them in the knockouts last year, if I'm not mistaken, before the Milan derby.
So they might want some revenge. Salzburg, honestly, I don't give them a chance, and I think Sociedad, obviously, having played them, know what they are capable of. I think they will create some problems नहीं for भाई, sure. Yeah. मतलब वही वही एंड मतलब काफी अच्छी बात है। मैं एक बार भावेश भाई तेरा आंसर देता हूँ, बट टॉकिंग अबाउट रियल सोसिएडाड, प्रथम भाई ने जैसे कहा, आई आल्सो वांट ला लीगा टीम्स टू गो फर्दर। लास्ट टाइम अराउंड इट वाज जस्ट रियल मैड्रिड हु मेड इट टू द नॉकआउट, ठीक है, बट अगर मैं रियल सोसिएडाड की बात करूं, देयर आर प्लेयर्स, देयर आर मैजिकल प्लेयर्स, एंड हैविंग प्लेड देम लास्ट नाइट ओनली, Kubo, Mr. Fantastic, that guy is gliding past You all defenses, really Mr. shouldn't have sold him, na? Considering how many मतलब years you all अभी have भी gone हमारे without पास, a right winger now. हमें हमारे पास अभी भी है, बट भाई देखो, यू इफ यू टॉक अबाउट इफ Kubo was at Real Madrid, was मतलब I don't think he will be able to make it to the starting 11. I'm pretty sure if Yeah, but Vinicius is fit. that's because Ancelotti plays everyone out of position. It's easy to say that when you know that's the case, but It's technically, not who easy, is your right? Who it's is the it is reality, though because he is playing. He is literally spent it's the the entire last reality, season playing people out because of position. देखो अगर मतलब Kubo आता तो मतलब ब्राहीम डियाज नहीं आता, तो ब्राहीम डियाज के साथ क्या हो रहा है, ही इज ऑन द बेंच, नो, ही इज अ राइट विंगर, ही Yeah, मतलब but सबसे who's ज्यादा। playing right? But you all have changed formation this season. Last season you all हाँ, didn't, na? तो भाई अगेन इन रियल सोसाइटी आल्सो ही इज प्लेइंग इन अ 4-4-2 ओनली, ही इज मतलब ही इज द टॉप मैन ऑन द राइट हैंड साइड, वेयर Rodrigo is, Yeah, but I where mean, Jose four Luis four is two playing four basically. four two is different. Yeah, you all are not playing out and out right midfielders like in the early 2000s. It's very different now, this 4-4-2. नहीं नहीं But मतलब see, man, I mean, listen, I'm talking about the last 2 years when you all played 4-3-3. Obviously, not this year. You all have changed formation, so now it doesn't matter. But like you said, he's playing well there, man. So he could be a problem. Of course, there's Zubamendi, there's Oyarzabal, who we luckily skipped both legs of last season. Bryce Mendes, I believe, is the Bryce Mendes. I haven't seen him play a lot, but I know he's a very good player. We skipped him, I believe, even in the knockout stage. So we got a little lucky, especially on the when we went to Spain to play them, and we were struggling because we had injuries and we played Maguire and stuff. I mean, like we could have got knocked out that day seriously if we had a little luck. But it's going to be a tough group, man. I think. See, listen, Italian teams, as far as I'm concerned, they are most likely to screw up in a group league. This is the most likely but country नहीं to screw up in a but group if you talk about Serie A teams in the Champions League lately, they're doing great, they're lately. doing मतलब last Yeah. मतलब Well, how year, well is Napoli doing? But right now, not very well, नहीं, is it? not very well, not very well. Lost to Lazio 2-1, then Genoa के साथ they have drawn 2-2, तो And मतलब how but about Inter this, Milan, dude? How about Fran Garcia playing? Huh? फ्रांस गार्सिया मतलब From मैंने हेलो Vallecano. भाई गोपाल नायर भाई, लॉन्ग टाइम यार, लॉन्ग टाइम, व्हाट्सअप। मैंने कल ही बताया स्ट्रीम पे, इफ सामने वाली टीम हैज द बॉल एंड दे आर अटैकिंग, you will always find Fran Garcia awful because defensively he is not that great, मतलब he is not physically great, he is not tall, ठीक है, और हर बार मतलब उसे काटना ड्रिबलिंग पास, Fran Garcia was not big of a deal, and if you are playing Fran Garcia, you have to then play Kamavinga on his side because he is going to help him defensively. Toni Kroos is not going to help him defensively, so it was too much work for Fran Garcia. But if we have the ball and we are matlab attacking, he is one of the best offensive fullback in La Liga. He was the best fullback in La Liga last year. Right, two magical क्या कहते हैं असिस्ट, मतलब कल उसने जो कटबैक दिया फेदे बलवार्दे को, उसमें फेदे बलवार्दे का शॉट काफी तगड़ा था, बट जो क्रॉस उसने होजेलू डाला था, फ्रॉम डे वन आई एम सेइंग दिस, इफ होजेलू इज प्लेइंग एंड फ्रान गार्सिया इज प्लेइंग, ठीक है, Fran Garcia is one of the best crosser of the ball, मुझे ऐसा लगता है right now. His crossing Dude, I ability is told way I too told good. people in my stream even, man. Don't sleep on Oselu, dude. Like I know he's not what you wanted, but I've always remember I've come on the stream and said he's a very very good makeshift striker until you all figure out what to do, and I मतलब really believe that. you cannot take out क्या कहते हैं Inter Milan from uh, Champions League this time around. Take them I seriously don't know, because man. भाई I don't know. Listen, I think anything's possible. Yeah, the भाई European stage, like, Laturo dude, I don't is think in hot form. Barcelona should have gone down when we played them. I don't think they should have. The thing that annoyed me the most नहीं last year यार, for Europa League is because I didn't expect to play Barcelona in it. I'll be या honest with you. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट नेदर भाई, उनकी इंजरीज बहुत थी। अगर आप देखो जैसे लाटूरो का नाम लिया है, अगेन थुर्रम इज ऑन अनदर लेवल भाई।
Thurram is having क्या कहते हैं फॉर्म ऑफ हिज लाइफ वाली बातचीत हो रही है थुर्रम के साथ. ही इज स्कोरिंग गोल्स एंड नॉट ओनली मतलब जस्ट गोल्स, ही इज स्कोरिंग गोलाजोस. मतलब थुर्रम का अगर मैं आपको स्टैट बताऊं तो मार्कस थुर्रम हैज स्कोर्ड मतलब in 4 matches he has given 2 assists and 2 goals, scored a goal for France as well. तो he is doing a great भाई, he is literally doing great. एक मिनट भावेश भाई की एक होती सोसाइटी इज स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर वाइज दे कैन पुल आउट इन दिस ग्रुप. हाँ भाई. भाई तो प्रेडिक्शन क्या है आपकी इस ग्रुप की? आई थिंक मैं विल बैक सोसाइडेड. फर्स्ट इंटर, सेकंड सोसाइडेड, थर्ड लाइप्जिग. It's between Leipzig, हाँ, Leipzig and fourth Salzburg, Baba. Leipzig, no. sorry Salzburg, Salzburg है ना, Austrian team. fourth Salzburg, dead last. Salzburg, Dead last. Salzburg तो last, Benfica third भाई. But Benfica is also a good team भाई. It's not कि भाई Benfica I is think also I think I'll go for a shock. Yeah, I'll say Benfica. No, I'll say Benfica, Sociedad, and I think Inter might fall out. I don't think so. I don't think so. But honestly, the team I don't think is going to go through Sociedad. But I like Sociedad team, so I'm rooting for them personally. But it's going to be tough. मतलब I have talked about Bayern United. Let's talk about Bayern United. क्या बोलते हो? Fan Gache is a Walmart version of Finnish Jordi Alba. अच्छा ठीक है bro. Yeah, dude, he's also like 20 years old, dude. Like relax, man. 23. Relax, man. What a player Chonalaglu is, भाई. He is a great player, भाई. भाई वैसे Jose Mourinho fans, a good result for Roma last night, 7-0. 7-0 भाई. Lakaka scoring, if you don't get it. Lakaka scored a goal. Dybala scored twice. Great goals by Dybala. Benfica first. दोस्तों क्या लगता है तुम्हें? इसका जल्दी से अपना प्रेडिक्शन बता दो. Bayern United, let's talk about it भाई. We have to talk about it. Nathan bhai, have you already given up on the top spot of this group? No. Listen, man, I don't care what anyone says. I believe we can beat Copenhagen and Galatasaray. I really don't care what anyone has to say about that. It's just people are just trolling if they think they are going to compete against us. And now we found out Wan-Bissaka's out for 2 months, dude. If we get out of this group with the amount of injuries we have, no, I don't want to hear anyone talk shit about my club because we have about 9 injuries right now. And they're almost all of them are first team players. So I don't want to hear any shit. And if we get a result from Bayern, even if it's a draw, no, people are going to have to really realize that writing teams off in Europe is a really stupid thing to do. That's it. I've realized that over the years. Siddhant bhai, if Leverkusen can do it against Bayern, if you talk about Leverkusen right now, they're in a red hot form. And but see what he says now. He says United can grind a draw, which I actually agree with. Grind a draw तो I drew, but saying and doing is two different things. No, but like that people said Barcelona would walk us off the park because they conceded 9 goals in the league last season, but they didn't walk us off the park when we went to Camp Nou, correct? Did they walk us off the park? I don't think so. Let's talk about Nathan. No, I'm just trying to say what is going to be in relation to Siddhant's backline क्या होने वाली? Backline, we don't have any options at all. It has to be Reguilon, Lindelof, Martinez, and Dallo because Wan-Bissaka is injured for 2 months now. And Dallo, we have to go with Onana. Maybe Varane might be fit. I would not recommend pushing him to start, but he might be fit for the game. Middle again, Amrabat undisclosed how long he'll return. Mount injured. Eriksen, Bruno, Casemiro is what I would go. I would play Pellistri. Diamond formation's not working for me personally. Listen, I would rather play Pellistri and get cooked than play a formation we have not played at all in the last 45 games and get cooked anyway. So Rashford, Pellistri, and Højlund, and that's who I would pick. I don't know what's his problem with Pellistri. I don't get it. In the background they're saying that they're looking forward to signing a long-term deal with him. I don't get it. Why the fuck would you sign someone to a long-term deal if you have no use for him? We have sold Ethan Laird for 1 million. We sold Zidane Iqbal for 1 million. Arey, just sell him, no. Let him continue his career. We are just ruining careers now at this rate. Like either play him or send him packing. Amad Diallo's injured. Anthony's suspended. Jadon Sancho's suspended. Like, dude, I'm telling you, if we grind a draw at Bayern Munich, no, I don't want to hear anyone say anything to me. The way we are short on players, no, it is inexcusable for Bayern Munich to lose to us. It is inexcusable because Bayern Munich can't tell me that their players are injured, dude. Compared to other players we have injured and compared to if they have injuries,
We should lose soundly. So if we get even a result, no, people have to really respect it, whether they want to or not. Because the way we are going to play this game with our hands tied behind our back, no, I'm telling you, we are going to be fighting for our life. And if we don't fight for our life, no, some of those players have to go, dude. I told you 2 years ago when your brother told me what kind of support this is, Nathan. You're not positive when your players are playing. I told him straight to his face on the live stream. I said, dude, if these people are not interested to play for the club, then how can I back them? This is not what fans are not supposed to blindly back, dude. I'm a grown man. I'm not a child watching dolls play football. If the players can't play for the badge, why the hell should I be excited for it? Now this week after the Brighton game, now I've seen creators, I've seen people on Twitter, I've seen people on Instagram moan and bitch about how they're losing love for United. 2 years ago when we were playing worse than this, no, that's when I told these people aren't going to play for the badge. 2 years later, people are realizing these people aren't playing for the badge. 2 years too late, man. 2 years too late. You remember what I told you, right? 9 players I wanted to sell, keep Ronaldo and De Gea. Which two players have gone? Which two players have gone? Ronaldo and De Gea. Remember that. Onana has conceded 5 goals. He's a good signing. It's not, none of it is his fault. He should be a better with reflexes, in my personal opinion. But that's because I am spoiled with David De Gea and his reflexive saves. I'll accept that. 5 goals we have conceded already at home in the Premier League. Last year we conceded 10, and we conceded the 10th one on the last day of the league. We have conceded 10 goals at home, and we have already conceded 5. We are so compromised, no, that if Bayern doesn't destroy us, no, it's actually a victory. It's actually a victory because that is how thin the squad has become. Due to injuries, due to suspension, due to whatever. But if you talk about Bayern Munich right now, they are doing good. I won't say Doing very good. matlab, they are doing good. I would say with the signings they did in the summer, I hope they are killing it every day. But they have just scored, by their standards, they have just scored 11 goals. Not as many. By Yeah. Leverkusen have scored more than them. Again, talking about the lineup, not conceding is not conceding तो चलो शायद United कर दे, but scoring against Bayern Munich is also a very tough task. If you talk about the defense is just so beautiful. Davis थोड़ा आप कह सकते हो इधर उधर, but there is Kim, there is Upamecano, there is Leimer, there is Dillit. Pavard चला गया क्या? Yeah, Pavard. Yeah. There is Inter Milan. there is still there is Mazurui. Kim and Jay, who we were supposed to get. Konrad Lehmer, who Ralf Ragnick suggested in January when he came 2 months before to get him because Leipzig didn't want to sell to Bayern. In the end, he went on a free, I believe, to Bayern. So. See, man, I'm going to be honest with you. I think it's going to. I think we will do well to get a draw. I think Bayern Munich are going to probably beat us 2-1. And I'm not going to fake positivity, dude. I saw people walk on the pitch again, Jayant. You know how I feel about that. I don't care about what quality and what ballers these players. I can't be bothered. If you're not willing to give your effort, no, I'm not interested. Guys, let's predict. Nathan is saying 2 for Bayern, 1 for United. I say it's going to be I think if we're lucky, man. If I'm being honest. I would say it's going to be a 3-1. What is that? 32% up saying 3-1? Sounds about right. Bro, people are coming on my stream and going, we are going to concede 8. I'm like, come on, man. Now stop talking this crap. Guys, let's remember कि भाई Nathan भाई ने कहा है 2-1. I have written 3-0. I guess Bayern are going to score 3 past Manchester United. I'm not against Manchester United or anything, but the amount of problems United have right now, it's too much, and they are going to face an in-form Harry Kane, who's doing great. अगर Bayern ने goal जितने मारे, either he has assisted या फिर goal मार रहा है. Not every, मैं कह रहा हूँ, मतलब he's in a very good run-up form. He scored against Bayern Leverkusen as well. Nathan bhai, given that Ten Hag is under pressure, do you think Bayern's game might start the sacking process? No, I don't think so. See, I'll be very honest. 6 games into the season, no. If you go by, let's take the Brighton game for example. Arsenal and Liverpool have beaten Brighton 1 in the last 7 attempts. Arsenal have beaten Brighton once in the last 5 attempts. Losing to Brighton, I know it's not the most sexy name in the planet, but believe me, they're playing sexy football and they're becoming a sexier and sexier club every year. First of all,
Second of all, we lost to Arsenal, who finished above us, and third of all, we lost to Spurs, who's in. If I'm being very honest with you, Spurs is looking like easily as one of the most improved team this season in the Premier League. I had a feeling Ange Postecoglou was going to turn it around, and he has. I've predicted them to possibly get the fifth Champions League spot in my predictions. So the teams we lost to, I don't accept the defeats, but I can understand it to some extent. The way we played against Nottingham Forest and Wolves is unacceptable. Um, I don't think it will start the sacking process, but I will tell you this: in the next 5 to 6 games, we have what I consider to be actual winnable games. And if we don't get 60 to 70% of those victories, by the time we have the Manchester derby, there's going to be real problems in our club. Like I think it's going to be disastrous if we don't get some wins in. So, yeah. मतलब I think if you don't make it to the next round of the Champions League, that That might could be. affect us. That could affect us. I know people seeing our group will expect us to at least go through. Whether it's top or second is a different argument. But Let's do a Leipzig Young Boys थोड़ा सा कर लेते हैं दोस्तों या Leipzig Young थोड़े से कर लेते हैं. Then the next match we are going to talk about Milan versus Newcastle. This is going to be a great match दोस्तों. First of Nathan भाई, Leipzig 3-1. 3-0. I would say 3-0. 3-1 because they are at their home, right? And young boys tend to score at their home against Liverpool as well. नहीं, they were Red Star. नहीं, आपके against भी गोल मारता ना, United Yeah. against it was a 1-1. Yeah. If you Yeah. remember. We played them. We've gone with Milan there versus with Newcastle. Milan versus Newcastle. Let's talk about this game, brother. Let's talk about this game. Newcastle back in the Champions League after some 12-15 years or so. Milan after getting knocked out by Inter Milan in the Champions League semi-final last year. One is semi-finalist और उसके बाद they have a common bond. Tonali उनके बीच में Tonali went to AC Milan. But on the other side, Inter Milan also have signed many players. Pulisic is there, Chukwueze is there. Then there is Loftus-Cheek. Loftus-Cheek is there, and then there is another new youngster जो Modric की तरह दिखता है. थोड़ा उसने रियल के अगेंस्ट ही स्कोर गोलाजो. एक मिनट में आपको उसका नाम बताता हूँ. काफी प्लेयर साइन करे हैं एंड बट स्टिल दे कंसीडर्ड 5 अगेंस्ट मतलब इंटर मिलान. दैट इज समथिंग हिस्टोरिकल. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, न्यूकासल won 1-0 और न्यूकासल भी इतना अच्छा खेल नहीं रही है. 1-0. The game was very back and forth. Another team that people sleep on is Brentford. Brentford is a very decent team. They won by penalty. Callum Wilson, stupid mistake. If you see the highlight, that defender was just terrible. Quite honestly, tried to back pass at such a weird angle, and they won by penalty. Callum Wilson scored. I was doing the watch along for that. न्यूकासल विन 2-0. क्या बात. ये चैंपियंस लीग में चैंपियंस खेलते हैं क्या? हाँ, yes bro. Tottenham नहीं खेलती. Romero bro, he is from Argentina. The youngster you're talking about. हाँ, Romero. Yes, Romero. Luca Romero. That's his name. Milan Newcastle will be 2-2 draw. Imagine what Tonali is going through right now. He was forced to leave and now is playing against his boyhood club. But Nathan bhai, talking about the front, the pacey front attackers that AC Milan have. If I talk about Rafael Leao, if I talk about Chukwueze, Pulisic, then there is Giroud, who's superb in the air. Then there is Theo Hernandez, who is not a defender. Don't get him wrong. He is not a defender at all. Luka Jovic, they have also signed. My man, Luka Jovic. If you don't know. Milan win by Luka 3. Jovic, got it. Also like the stream if you have not liked it up till now. Or please subscribe to Nathan's Bhai's channel as well. Sportsnut Nathan, if you haven't. Milan win by 3. Win by 3. I mean a difference of 3. Abin. I don't know about that, man. Nathan bhai, do you think Newcastle की defense इतनी अच्छी है? So here's the thing. Good news is Botman has come back. He played the game the other day. Listen, yeah, are they defensively good? I believe this is the first clean sheet they had this season, if I'm not mistaken. So that's not a good sign against people like Leao and Giroud. Obviously, Giroud will be very familiar with Premier League teams. That Newcastle is all defeated Aston Villa 5-1 in the first game. Yeah.
Yeah. Good one. It was supposed to be the more competitive game on the first week, and Newcastle just ran away with it completely. It was Botman, tight. Scar, It Trippier, and was like Son. 3. It was 3-1, and then they opened up, and then it became fun. Milan winning is Champions League heritage. I will back them 1-0. Don't sleep One on Alexander one Isak. one Nobody. nil. Don't sleep on Alexander Isak. No, definitely not. I think it'll be 2-1, and I think they will AC Milan 6 times show some respect. Rav, you're saying they're going to win by 3. You're not showing Newcastle any respect. And if they also lost by 4 goals, literally 2 days ago. I am. It has nothing to do with me showing them नहीं respect. They're आपको not नहीं कह playing रहा a वो very good game. लावण्य बने का AC Milan are shite. It just showed their place. So last season they were the best defensive team, but that's why what makes it shocking, Michael. They have only had 1 clean sheet recently, so that is true. They were the best defensive team last year. That's why I don't understand how Abin thinks they're going to win by 3. But So, of course, it's his opinion, and if it happens, that will be a great call. so you But say this honestly, or I think this? Milan are going to win 2-1. That is my call. There is no way Milan is going to Newcastle is going to keep a clean sheet. They're Because definitely going to eat goals. I'm also going to back AC Milan because I'm a Portugal supporter and love Leao by how he plays by. Yeah, I'm backing Milan because I think Newcastle will get a little overwhelmed under the Newcastle going to thrash them easy, bro. I don't know about that, man. They Morata have to भाई go to नहीं the भाई. I San don't think Siro. so. I don't know about that, but 2-1, I say Milan will win. Shakhtar and Porto ये भी काफी अच्छा मैच है. Let's talk about the scoreline only. मतलब I favor Shakhtar to win 1-0. Shakhtar without Modric 1-0. I No, will go Modric's for. not even playing well in Chelsea, dude. What difference does it make without और Modric? उनमें तो Like, अच्छा खेल रहा था. उनमें तो अच्छा I खेल रहा था mean, ना. how long was he there? But before he anyway left, 1 year. So, 1-2 2 year तो था oh, ही भाई बंदा. oh, if Pepe 8 scores, goals. that would be fun. But yeah, But I that would would be say fun. Pepe scored, but I'm going for a Porto win. 1-0 Porto. Otto win नहीं at boring in Ukraine. boring match 1-1 draw. Sleep Fun, guys sleep. Porto win possible. 2-0 Pepe scores. Okay. मैं अब ये सारे मेरे प्रेडिक्शंस हैं. नितिन भाई की आप सुन सकते हो. मैं अपने प्रेडिक्शन से जा रहा हूँ. बार्सिलोना एंड मैनचेस्टर सिटी दोनों का कर लेते हैं 5-5-0. क्या कहते हो? If they don't do that, I'm disappointed by 5-0. Lewandowski and Erling Haaland for the top scorer race. Top scorer. भाई गो दोस्तों इसी बीच में आपसे पूछता हूँ नितिन भाई. So many great forwards. Who's going to win the UCL top scorer? Right? Do you think Haaland will win it again? It'll be Haaland. Yeah. मतलब बट किस किस के बीच में होगा? एक तो हालैंड हो गया, लेवेंडोस्की होगा It'll for be sure. between Haaland, Lewandowski, and Mbappe, who's the striker for Inter Milan? Thuram, or you can say Lautaro. Yeah, Lautaro Martinez. It should be between them 3. दोस्तों क्या लगता है आप लोगों Mo Salah. Well, Mo Salah's not in it. No. Yeah, it'll be them 3. को? No, Rashford? I didn't make a joke. I'm so used to saying that even I actually forgot. But Rashi? no. We are going to by the time all our players are fit, it'll be New Year. We are going to grind out the first half Harry of this Kane? group. Harry Harry Kane Kane might. is a possibility, yeah, but in दोस्तों Europe, they play so wide open that I feel Bayern Munich are going to have like a bunch of scorers, multiple scorers scoring a lot of goals. दोस्तों क्या लगता है आपको? अविन भाई, माइकल ब्रो, लॉस ब्लैंकोस, प्रथम, लावण्य, who are going to be the 4 top scorer for the Champions League this time around? In my opinion, Haaland for sure, Lewandowski for sure. If these two names are not there, I will be disappointed. Harry Kane for sure. Bellingham, no, bro. I don't think so. और ग्रुप्स देखते हैं. Bellingham? No, Bellingham, I don't. I think I might say थुर्रम का नहीं लिया तो नहीं हो सकता. रुको जरा एक बार ग्रुप्स देख. It'll probably be Kane, Martinez, Lewandowski, Haaland. It'll probably be them only. Don't sleep on Alvaro Morata, brother. No, thank you. Next. No, thank you. Osimhen? No Osimhen? Nah. Then they're struggling this year, bro. It's not going to happen. Ozil, They have yeah, one my good bad. season, man. It happens a lot, but Ozil,
Oh, dude, the dancing I'm going to do if that happens, no, you won't believe. I'm going to be doing the dancing, being called delusional, and he's not as good as a certain who gives a crap. I rather not say his name. So Nobody from I'll be Arsenal. dancing. I'll be dancing more than Jayant, I think, at the end of the season. Haaland, Kane, Mbappe and Lewandowski. Seaman. Seaman तो नहीं हो. Leva, Kane and Haaland, Leva and Kane will be between them. I'm no Mbappe, but I'm shocked by Good पता नहीं. shout. Good shout. मतलब यही है because Haaland and Lewandowski will have a kick start. They should have because of the I mean, groups. Haaland should score 10 goals before the group is done. He Like, can if he people are can. going to tell me the Man City group is tough, no, I'm going to laugh at them. I don't think it's tough. I'm pretty sure भाई he can break this record of Cristiano Ronaldo 17 goals in a season. He can do that. I think he's going to score 10 in the group. I really actually think so. Okay. It's But quite 5 in danger this season, for 5-0 sure. and 4-0 दोस्तों. LOL 10 goals. हाँ भाई 10 तो रहते हैं. I'll be generous. I'll go. Arey, they are at home even. You can't be generous. I'll go with 2-4 nils. You can't even be. Dude, that's 31% saying 5-0. 31% is saying Oh. 5-0 भाई. Rough, Paris rough. versus Dortmund. Now let's talk about this. Stream होगी अगर हाँ भाई कल stream होगी क्यों नहीं होगी भाई. अरे Nathan on stream, how are you brother? वकार भाई क्या Hey, हाल है? Vakar, good evening. What's up brother? What's up? How do you do? एक मिनट वकार भाई, we are playing this predictor. ठीक है तो we have started with 3-1 Leipzig, 2-1 Milan Newcastle, 1-1 Shakhtar Porto, 4-0 Barcelona, 5-0 City, and now we are at PSG versus Dortmund. Let's talk about it, Nathan भाई. दोस्तों जल्दी से बता दो PSG and Dortmund. what are your views? सबसे पहले बता दो भाई. Do you think Dortmund के पास कुछ भी ऐसा है to dismantle PSG? Do you think that actually it's true hat-tricks in group stage for Haaland? I think so. Easy. Let's go. In the group stage, if Pep doesn't substitute him. हाँ Pep ऐसा करता है ना, फुद्दू बनती. I forgot that's a possibility as well. Exactly. बताओ यार your views about Dortmund. Listen, I pray to whatever footballing gods that exist, that they absolutely smash PSG. My God, the scenes. Twitter will be the most fun day for any random mid content creator if they smash PSG. It will be the best day. I definitely don't think Paris Saint-Germain is going to win the Champions League this year. I said it every other year, Jayant asked me, and I definitely don't think they're going to win this year. So you can write that one down wherever you want to write that. He's going to be folding his arms doing this a lot. He probably will miss a few games, even knowing how unreliable he is of a person. So I hope Dortmund absolutely crush them. Oh, I love these answers. 3-0 Dortmund, 3-2 Dortmund, 2-1. Oh, I love it. Love it. I love it. I think it's going to be 2-1. I think Dortmund will edge it out. भाई डॉर्टमुंड का देख रहे कुछ भाई. डॉर्टमुंड की अगर बात करो बुंडेसलीगा में, they have played 4 games, 2 wins, 2 draws. Last one is a 4-2 win against Freiburg. Main scorer is Mats Hummels भाई. If you talk about the lineup of Dortmund, it's not that exciting. मतलब young lads हैं, आप देख सकते हो. Eddie Ami is there, Haller number 9, then David Milan, Sabitzer, Emre Can and Brandt. ये काफी experience midfield आप कह सकते हो. Midfield is very beautiful भाई. All my homies hate PSG, need Dembélé to hold the L. Okay भाई, and you are here. We all know PSG are favorite, just all loving mutual. Vakar, Jayant can attest to this. I've never thought they were the favorites to win Champions League. I've always been very firm on that. They are, if everyone calls Arsenal chokers, Spurs chokers, no. There is no better choker than PSG. There is none. They scraped by last season in the league with Messi's goals. You know how many games they won 1-0 where Messi saved them? There is no Messi to save. Dude, they beat Lens by 5 points at the end of the league. So, and they are not the same team they were even last season. So, I like Dortmund's chances. Let's just put So it 40 that way. people are watching us. Let's like the stream. Let's take it to 40 You can get the likes likes up, as soon as guys. possible. As soon as possible, dosto. I know it's very late, and everybody who has joined in, thank you very much, and thank you Nathan Bhai. At this short notice where you came. There we go. Shout out to Los Blancos. They recently lost to Nice 3-2. Yep.
Not that I'm a fan अगर of तुम दोनों Radcliffe, but दोनों that's brilliant. तुम दोनों पीएसजी की बात करो या फिर तुम बात करो अबाउट दिस टीम, क्या कहते हैं, डॉर्टमंड, Oh दोनों no. के दोनों दोनों की दोनों टीम की स्टार्ट्स टू द लीग हैजंट बीन वेरी वेरी ग्रेट भाई. डॉर्टमंड ने 2 ड्रॉ खेले, इन्होंने भी एक ड्रॉ खेला फर्स्ट मैच 0-0 एंड देन दे लॉस्ट टू नीस अभी 3-2. So they are not in a very solid form, but if when you No, talk about they're just not as strong anymore. The veil has been removed. Messi, I'm telling you right now, go back when you're free. Just see some of the results. Messi has literally saved them to win another league, dude. The disrespect he got at the end of last season. There are so many games where he has the winner and not necessarily even starting the game. When I tell you they scraped through last season, no, they scraped through last season. And now they don't even have Neymar and Messi. They don't have Ramos. Bro, they if have people played think they are the favorites still to win Champions League, no, I don't know what to tell you guys. PSG Like have played seriously. 5 matches, 2 draws, 2 wins and 1 loss. That is the, क्या कहते हैं, summary of their campaign up till now. And if you talk about players, तो फिर players की कमी नहीं होती. And PSG की last match की अगर तुम वो देखो lineup, the lineup was Hakimi, Danilo Pereira, Skriniar, Lucas Hernandez. I don't know why. मतलब when that guy is going to come. Portuguese fullback, क्या नाम है हमारे लड़के का, नुनो मेंडेस. You know, man. वो उसको बहुत मिस कर रही है, वरना लूकास हर्नांडेस खेलेगा डेनिलो पेरेरा की जगह इन द सेंटर बैक्स फॉर पीएसजी. You know देन how देयर I इज feel about Danilo Pereira, dude. So let's just move भाई द on फ्रंट from that थ्री one. ऑफ द फ्रंट थ्री इज एक्साइटिंग भाई, यू हैव But टू से दैट. when has the front three not been exciting of PSG? That is my argument. Dude, their front नहीं, three has always been good for the the last 10 front years. three is exciting and serious also this time around. Yeah, but I It mean, looks like dude, they can't possibly be better than Neymar and Messi, right? They can't possibly be better. Can they? Yeah, you can't win UCL with attitude PSG. I agree. obviously by there is, but the amount of No, they just talent think they by can buy why. whoever wants to leave a prior club with Listen, extra why money and earlier think they're they going to win had a only, European Champions League. brother, earlier they had only one Mbappe. Now they have 2 Mbappes. Can you imagine that? Ethan Mbappe is also on the Oh bench. my God, he is Just also kidding. signed for PSG. Bro, how do these people? He's How also do coming to these Real people like? Madrid. Just kidding. He's also. I want the Mbappe in Real Madrid, not Kylian. It's Ethan. Ethan Mbappe is my favorite player. Not even kidding. Let's predict why. Score predictions करते हैं. I say 2-1. I think Dortmund will scrape through. Hopefully. Dortmund will 2-1. काफी अनलाइकली है नेथन भाई, काफी अनलाइकली Bro, if मतलब. we can go and beat them, then why can't someone else go beat them? Simple. They're not exactly the most fluid club at the moment. We won. Oh wow. I'm because of the quality difference. मतलब if Dortmund plays There is a a sort quality of, difference. there There is is a a difference. quality difference. For sure. For sure. दोस्तों आप बताओ आपके प्रेडिक्शन क्या है? I have said 3-1. PSG winning 3, Dortmund 1. PSG fans are high on drugs. PSG fans are high on drugs. God, No, I dude, want I Haaland just think Madrid they to enjoy run the fact Chelsea. that they get to bully little clubs around everywhere. वकार भाई, तो मेरी टीम में Happy Haaland. that got that meme got thrashed भाई. Meme ही thrash हो गया भाई, पहली बार ऐसा हुआ. 2-1 PSG, 2-0 PSG, 1-1 ड्रॉ. भाई मजा आया, मेरा बर्थडे है, बारसा जीत जाए. हाँ भाई जीते, और हैप्पीएस्ट बर्थडे ब्रदर, हैप्पीएस्ट बर्थडे. ब्लैक 7-0 वॉटर. 7-0 Dortmund. Oh my god. Oh my god. लव PSG फैंस, हु आर दे, So वेयर आर दे? भाई जो थे वो every वापस चले गए. अब MLS, जो भी PSG फैंस बने थे कुछ के लिए, वो मेसी आया था, वो MLS जा चुके हैं. PSG हैव फैंस भाई. मैं तो चाहता हूँ PSG फोर्थ है, सारा श्राप लगे इनको. हाँ भाई, अगर वो नहीं खेले तो फिर बात ही अलग है. दोस्तों, लाइक द स्ट्रीम इफ यू वांट, लाइक हाउ ऑन अर्थ पीपल आर सपोर्टिंग PSG. आई एम नॉट सपोर्टिंग भाई, बस वही है. I don't think they're supporting Abin. I think they just aren't as positive as we are. Let's just put it that. Let's talk Let's about just put it Lazio that versus way. Atletico Madrid भाई. Let's talk Oh, about Lazio let's versus not, dude. I have no time for Atletico Madrid. I have none. Atletico I Madrid rather है. I rather go watch Dempo play football, dude.
Not interested. Atletico Madrid is a team that is very, very unpredictable. They have defeated which team? Granada 7-0. They're They have lovely. Oh, defeated Granada. my God, they went above 2 for the first time in 10 years. Lovely. Then they lost 3-0 to Valencia in the next game, where Hugo Duro, ex Real Madrid player, showed class. ठीक है। तो भाई काफी अनप्रिडिक्टेबल। वैसे लाजियो का भी सेम चीज है, सेम सीन है। एक दिन जीत जाएंगे, फिर अगले दिन फ्लोरेंटीना से हार जाएंगे। दे डिफीटेड नापोली 2-1। दे वर फैंटास्टिक इन दैट गेम भाई, फैंटास्टिक प्लेयर्स। अगर आप देखो तो वो कमांडा भी शायद इनके पास ही आ गया। हाँ, कमांडा शायद इनके पास ही आ गया। ठीक है, तो इनके पास प्लेयर्स काफी अच्छे हैं, फिलिप एंडरसन एंड ऑल दैट। प्लेयर्स तो काफी अच्छे, काफी प्यारे हैं। अगर लाजियो की तुम टीम दिखाऊं तो बताऊं तो मैंने देखा था अभी He went from West Ham. No? He went from West Ham to, I think he went to Porto, and then I think came back and then Lazio he went to lost Lazio. 3-1 to Juventus, sorry, 3-1. And by I'm telling you, Italian league is very up and down here. The Italian league is very up and down. भाई Seriously. वकार भाई को भी याद है, सबको याद होगा, Zirota को भी। I was saying कि bring in Vlahovic even for a single season. Bring in Vlahovic, that man is on I fire. think you all should have bought in Immobile. Dude. नहीं भाई, मेरी ख्याल से तो यही था आंसर भाई। Immobile, Felipe Anderson, Zaccagnini, Luis Alberto, ठीक है। हाँ, Kamada is here भाई, Kamada, Daichi Kamada. He used to play for which team? इससे पहले Frankfurt. किसमें था? फ्रैंकफर्ट। हाँ, फ्रैंकफर्ट, डाइची कमाटा। I love अच्छी team। Siddhan's answer. Siddhan's answer is probably the most accurate one. 0-0 written all over this tie. नहीं, not written 0-0 I think। It's very true actually. लाजियो और एटलेटिको मैड्रिड पिछले साल भी हुआ था ना, if I'm not शायद नहीं। I think it's going to be a boring 1-1। Yeah, fair. Feyenoord versus Celtic कुछ भी कर लो यार। 2-1 to Feyenoord। I think Feyenoord's going to win. I say Feyenoord's going to win 2-0. Real Madrid Union Berlin, जल्दी से बता दो। 3-1 Atleti Madrid. God, how could you? अबे स्लो मोड कम करना भाई, क्या Nathan, मतलब brother, slow why do mode you है? have this level of hate for PSG? Dude, I don't hate PSG. I just think, I don't consider them a football club. I don't hate them. well, see, I can say that, but that is little harsh. But in reality, I don't like their process. Let's put it that way. I don't respect their process. You know, they people like to troll Potter for the trust the process thing. No, I don't believe in their process. Let's भाई just put it that. स्लो मोड हटा ही दिया मैंने। हाला मैड्रिड 3-1। हाँ भाई 3-1 भाई, हाला मैड्रिड 3-1 बिकॉज कंसीड करना तो हमारी आदत है। बट आई एम गोइंग फॉर अ 3-0। आई वांट Lunin for a, if Lunin is playing it's 3-0, if Kepa is playing it's going to be 3-0. Lunin, baby. Lunin. Just kidding. I will say 2-0. Hosselu Bellingham. Let's go. भाई ने भी कहा है। One for Gosens. Come on. That's what I'm talking about. What's up Death Slayer bro? What's up? Team Hosselu all the way, dude. Galatasaray 5-0. Galatasaray 5-0. Wait, what game is that? Oh. Copenhagen. 2-0? Yeah, 2-0. 2-0. I'll be a little respectful, but I have a feeling Copenhagen is just going to crumble under the pressure, to be honest. That is so true, bhai. No two ways about Galatasaray it. home 3-0. That is true. They are also playing at home. That is true. I want to say Brave इधर तो ट्राई कर सकते हैं। यस भाई, इधर तो ट्राई कर सकते हैं, बट करेंगे नहीं, दैट इज फॉर श्योर भाई। बेनिफिका साल्जबर्ग 2-1 भाई। बेंजामिन सिस्को Salzburg, right? Yeah. No, I'll go 2-0. I'll take 2-0. 2-0 बेनिफिका। Yeah. Real Sociedad Inter Milan. Now this is going to be interesting, भाई। 3-0 Sociedad, dude. Huh? Any team that accepts Romelu Lukaku as a player, I don't count. No, I'm joking. I think, oh, why? Yeah, we have won and played. I think it's a very tough stadium. Yeah. I'll say 1-0 Sociedad. I'll say they'll beat that at home. I've seen the stadium. I've seen the atmosphere. Yeah, you can overwhelm a team that way, man, for sure. Any stadium that has the stands going almost vertical, no? You know, whenever there's a stadium that has the stands going almost vertical, we have done it already. Pressure. We have done it. Bayern 2, United 1. मैं 3-1 लिखा है। मैड्रिड डर्बी नेक्स्ट, आई वुड से नहीं, झूठ तो नहीं भाई।
भाई 2-2 बिकॉज इंटर मिलान जिस फॉर्म में है एंड जस्ट बिकॉज सोसिएडाड ला लीगा टीम है और उस पे इसलिए तो मैं अपनी सिंपैथी दिखाते हुए 2-2 कर रहा हूँ. ब्रागा नापोली इट्स गोइंग टू बी 3-0 when Do you think so? Do you think Napoli is going to go to Portugal and win that convincingly? इस ये गेम मेरे को लगता है काफी डाइसी हो सकता है. Arsenal But 2-1 PSV, bro. PSV at is a good home, team. Yeah. at home. 7-2-0. I've learned my lesson. Go to the Ramon Sanchez. Dude, we played Lons, dude. If they consider against Lons, I'll be surprised. I Sevilla really is will be. Sevilla was 20th on the table. They just won a single match. Bro, they were 17th on the table when they were 13th on the table when we played them. They still beat us. 13th. हाँ तो No, but it means they were still bad, dude. I'm not 13th is not good, no, for a team 13th in is better Europa than League. that is better than 20th. It is By better than मतलब 20th, but Lons, we played pre-season, dude. I mean, I think it should be very comfortable, personally. दोस्तों दोस्तों एक एक मैं अगर आपको दूं इन सारे जो मैंने प्रिडिक्ट करे हैं उसमें से किसी एक का चेंज करना हो तो आप कौन सा वाला चेंज करोगे जल्दी से बता दो. एक रुक जाओ इसको छोटा कर देता हूँ ताकि सब आपको दिख जाए. मोस्ट ऑफ देम यू कैन लुक एट मोस्ट ऑफ देम. कौन सा एक है जो आपको लगता है भाई ये तो आपका बिल्कुल गलत होने वाला है. क्या लगता है भाई कौन सा आपको लगता है कि भाई बिल्कुल गलत है. ये 3-1 2-1 1-1 या फिर ये सब. I think we have been pretty fair. I have a PSG feeling भी that Barcelona and Man City might not actually score that much. I think that's the part where we will fall short. I think the 4-0 others, I Bayern think we के have been आगे. quite fair. 7-0 4-0 Bayern. So it's possible, dude. Now we don't have another defender. Very possible. But let's see. I mean, if they have any dignity, they will play with some pride, dude. I don't know what else to say. There is no nice way to say it, but that is the truth. People will make United will score excuses at for least them. They one didn't goal. have enough players and all, but you got to play with some pride, dude. That's my opinion. इंटर विल विन 3-2. तो अगर देखा जाए कि किसकी वॉच अलोंग कर सकते हैं कल. वॉच अलोंग वाला मैच कौन सा दोस्तों इसमें से? कल विच इज ओके विच इज मतलब न्यूकासल वर्सेस मिलान तो कर ही सकते हैं भाई. ट्यूसडे 10:15 लेट्स गो. न्यूकासल एंड एसी मिलान लेट्स डू दैट भाई. आराम से सोएंगे उसके बाद कोई अच्छा मैच ही नहीं. ओ पीएसजी एंड डॉर्टमुंड एक काफी अच्छा तगड़ा मैच. Actually, Arsenal Feyenoord will be a good match. आर्सेनल फाइनल would. But let's see भाई. It should be a good match, at least in my opinion. Anything can happen, obviously, but दोस्तों स्ट्राइम न्यू लाइक कर दो यार वक्त से पहले. Milan game, Vakar Singh. मिलान यस भाई लेट्स डू मिलान भाई. मिलान करते हैं भाई कल मिलते हैं दोस्तों फिर उसके साथ. थैंक यू नितिन भाई फॉर ज्वाइनिंग अस दोस्तों. हमने प्रिडिक्टर भी कर दिया. आई होप मैं सारे के सारे जीत जाऊँ. फिर कल हम लोग चौपाटी पे मिलेंगे. बढ़िया एक Michael, नंबर. Michael is a Real Madrid and Newcastle fan. He's saying away the lads. Over the lads. Good night guys. Probably. Thank you all. Thank you everybody भाई. इतने लोग इतनी लेट मैंने 11 बजे शुरू करा. And still you guys were here. Thank you यार. वकार भाई. Thank you Death Slayer brother. लावण्या भाई. my members शायद थोड़े कम ही So होंगे but home, they are it's pretty home. loyal members. It's home. Swap भाई love you. Thank you दोस्तों. हाला मदरीद भाई. अबिन भाई. चाकू भाई. Everybody thank you very much. I love you all. Love you all. Thank you very much for joining in. Thank you Nathan भाई. दोस्तों subscribe to Thank you, Sports guys. Nut Oh, Nathan. and one more thing, guys. Have a good Ganesh Chaturthi tomorrow. Whoever is celebrating 1.5 days, have a good day tomorrow. Enjoy your time with your family, and Happy Ganesh Chaturthi to let's play everyone. some Champions League football, man. We're back. Football's back. None of that international crap. चलो दोस्तों इसी के साथ आराम से सो हिलाओ दबा के मिलते हैं. बाय बाय.